हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सभी के? अभी पता है मैं कहाँ पर हूँ? द मेका। ये पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा फेमस जिम है। आर्नोल्ड यहीं पे वर्कआउट करता था, तो पता नहीं कितने सारे एथलीट अभी भी वर्कआउट करते हैं। ये जिम के बारे में मैं पूरा टूर आपको वर्कआउट के बाद देने वाला हूँ। अभी मैं जोशुआ का वेट कर रहा हूँ, जिसके साथ मैं वर्कआउट करने वाला हूँ आज। फाइनली गाइस, जोशुआ इज़ हियर। आज हम चेस्ट ट्रेन करने वाले हैं। हाउ आर यू ब्रो? I'm awesome, man. I'm ready to get this lift in. It's our first time ever training. Yeah, and then with Joshua, I'm going to give you a whole gym tour. Joshua gonna help me in that. Let's start our workout, bro. Let's do it. Verified cause I'm dope. Got that check mark, I'm a pro. Cause I lift them up and give them hope. And now I'm about to drop another post about how I'm verified cause I'm dope. This is for my people in the front row. For the new ones who didn't know, I'm not just verified cause I'm dope. Let me tell you how I used to be struggling broke. Now I'm sitting on a pot of gold. And I know you heard that before. You heard it, but the story really must be told. I've been hungry, I've been stuck out in the cold. On tour, broke down on the wrong road. Couldn't believe I made it when I got home. Got nothing to lose, so I press record. One take. Cause when you independent trying to grow, you need a whole team showing you which way to go. For a while I was trying to take it slow, but this time it's about to blow. I'm from a small town in the woods. Don't mean that I don't got the flow. I got it. Challenging the status quo. Cali to Brooklyn, touring the US shows. I booked them, too big for the small town. I grew up in, big fish in a small pond. They hooked them. The chosen one, they found him. Going hard regardless of the outcome. Hustling jobs to fund the next album. Now that he's verified, everyone surround him. Verified cause I'm dope. Got that check mark, I'm a pro. Cause I lift them up and give them hope. And now I'm about to drop another post about how I'm verified cause I'm dope. This is for my people in the front row. This is for the new ones who didn't know. I'm not just verified cause I'm dope. There you go. तो जिम टूर के लिए यहाँ पर बाहर में पूरा का पूरा जिम है। ये अभी मैं बाद में दिखाऊंगा, बट स्टार्ट करने वाले हैं विद जोशुआ। Okay. Gold Gym VIP black card. Let's get in here. That's the entrance, and entrance पर ही most famous dumbbell. Why these dumbbells are famous, Joshua? They're just built for the abominable snowmen who want to walk in the gym here and there. I can't even budget, I'll tell you that right now. Can you they lift do them? look really good. Can you lift them? Oh fuck. Dude, I can barely spin it. I've seen some people row it with one arm for reps. Seriously? Yeah, but they're like 260 plus. There's some big boys. Maybe one day. Yeah, Not one day, today. one day, yeah. One day. यार एक हाथ से डंबल पूरा लिफ्ट भी नहीं हो रहा। और यहाँ से the most famous branding, the MECCA. Arnold used to work out here, and that's why it's the most famous gym in the world, right? Yeah, because of Arnold. He did his whole bodybuilding journey here, right? Yes. Yeah, okay. So the thing is, a lot of this has been redone. It's changed a lot since the golden days. Like a lot of this new equipment recently been placed in here, which I can't complain. It's amazing. Obviously, you see along the walls the greats. Not even just in fitness. You see, like Kobe. There's some movie trailers up there, like Terminator. Kobe used to be here. Yes. Yeah, man. It's really decorated. All these pictures.
काम. Out with mirrors to admire the pump. Of course, like boom. It's my favorite. एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा अच्छा पंप आता है बिकॉज, और ये जो 3 लाइन्स है ना, रेड, ब्लैक एंड रेड, दीज आर द मोस्ट फेमस लाइन्स. बिकॉज यहाँ पर जब भी कोई भी आता है उसको पता चल जाता है कि यार ये गोल्ड्स में आया हुआ है. ये सबसे फेमस जिम, सबसे पुराना जिम है, और ये इतना बड़ा है, हो जाओगे तुम लोग इस जिम में. अभी ये केवल एक एरिया है और ये 1/4 भी नहीं है अभी इसका. आगे चल के और दिखाते हैं. यहाँ पे ऐसे घूमते ऐसा लग रहा है कि जाने कितने हैवी लोग वर्कआउट कर रहे हैं भाई. 130-140 kg प्लस लोग. ये देखो, ये ब्रांडिंग, वहाँ सारे एथलीट्स सब लोगों की फ़ोटो लगा हुआ है. They've never seen this before on your channel, huh? This is gonna be insane. यहाँ पर एक हिस्ट्री जुड़ी हुई है इस मिरर के साथ में. So apparently what I've been told, this is the only one left from the golden era. This is the only authentic piece of golden era Arnold left. used to work out here. Yes, and these new mirrors have been recently installed, but this right here, literally just this corner, is still authentic golden era classic. तो बेसिकली ये जो मिरर है ना, ये आर्नोल्ड के टाइम का मिरर है. ये चेंज नहीं किया गया. मोस्टली सारे मिरर, सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, बट ये मिरर उस टाइम का ही है जब आर्नोल्ड यहाँ पे वर्कआउट करता था. वाह, सुपर लकी. कितना बड़ा सेक्शन है ये, बहुत बड़ा. Yeah, I know him. You ever seen the video where he's doing pull-ups? Yeah. And he's just going crazy and he has his homie spotting him? Wow. That's the bar. I love that they still keep some of the old school equipment in here, like this, the leg extension machines, the lying hamstring curl machines, the blue. Changed equipment. Not all of it. Not They all still of left it. some from. There's Yes. still some old school equipment there. Yeah, like this right here, definitely old school. Let's see. ये उसी एरा I've की never seen anything else. An adjustable pull-up bar on a pull-up bar, and Wow. this is wide as hell. And for those of you who are familiar with old school bodybuilding, first of all, you know that if you're doing pull-ups, you need to go wide. I only ever do wide grip. This right here is ultra wide. I tried it once. एक हाथ यहाँ, Because you got some long arms, you got a wingspan. ये बहुत वाइड है. Damn. Oh. Like I'm stretching my legs. I know. Yeah. Guys from back then looked the way they do. 'Cause they had the equipment that you don't have anymore today. I'm glad they didn't change that. ये दूसरा सेक्शन है, देखो ये भी कितना बड़ा है. How old these are? सोचो ये आर्नोल्ड के टाइम की मशीन्स हैं. Those machines right there for legs. Old school. Tom Patch used to run that up. Wow. That leg extension used to run that up. So that's enough motivation for leg day for me. That's for sure. It's a stretching area. They'll have mats in there. They have that stretching little mechanism. पूरा ही एरिया स्ट्रेचिंग एरिया. सोचो कितना बड़ा है. ऊपर चल के दिखाता हूँ मैं आपको. वी कैन गो देयर, राइट? Yes. एंड ये एक और सेक्शन. They got a neck machine back there along that wall. ये जितना कैमरे में दिख रहा है ना, उससे बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है यार. और यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा फेमस वॉल, सबसे ज़्यादा जो आपने जितने भी फेमस एथलीट्स हैं ना, उन सब के वीडियोस में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि वो यहाँ पर पुल अप कर रहे होते हैं. ये जगह सबसे ज़्यादा फेमस है. ये पूरा पेंट निकला हुआ है और ये डिज़ाइन लगता है. Installed. They just put those tents up, and then they have all new equipment in there. एंड पता है यहाँ पर है ना, कैमरा यूज़ करना अलाउ नहीं है. जोशुआ कुछ इतने टाइम बाद ही गॉट द content creator pass, right? Yes, you gotta be on a content creator list at this gym to have privileges to film with the camera. Because he's with me today, he's able to use the camera and take his shirt off. But if you're not on that list, the staff will tell you can't do that. Oh, strict rules. Oh, these machines are all old. Counting is correct. There's 1 room, 2, 3, front, so that's 4. And The wall, there's one outside area also. 6 areas Yeah. of the gym. 6 areas in this big ass gym. And these areas are so big. I know. There's nothing like it, honestly. It's a blessing. I live about 12 minutes away, so I get to make this my own gym. But I'm glad you're staying a little bit after the show, so we can catch some more training sessions. I'm thinking about that because मैं भी सोच रहा हूँ कि शो के बाद में मैं यहाँ पर 7 days का पास लेके जोशो के साथ मैं ट्रेन करूँगा. तो इसी जिम में बहुत मज़ा आएगा क्योंकि काफ़ी सारे लोगों से भी मिलने का मौका मिलेगा. और जोशो अभी 12 minutes away. He's just 12 minutes away. So मैं भी आसपास में कहीं पर Airbnb देखकर कोशिश करूँगा. बट पहले शो पर फोकस करते हैं.
and he just told me that Arnold comes here in the morning 8 a.m. and that's crazy. सोचो यार कोई तुम्हें बताए कि अरे अभी शाम को वर्कआउट करने के लिए आए हो, सुबह 8 बजे आर्नोल्ड आता है यहाँ पे, तो कितना क्रेजी सा लगता है ना. आर्नोल्ड मतलब if you are into bodybuilding you know him, Even and if you are not into bodybuilding, you know him. because and that's crazy, he workouts here. Oh, what I'm saying, he workouts here. He used to work out here. Now we are going to show you posing room. MECCA. Wow. This room right here is legendary. This room where the greatest have practiced before their Olympia shows. Multi-angle mirrors you see everywhere, in the back, the front, Oh, every angle, yeah, right. above, to the side, you see it all. And then there's adjustable lighting. You can lock the door so it's exclusive, it's private if you need it to be. Oh, right. Oh, you can adjust the It's a light. disco, but no. Cardio section. कितना बड़ा कार्डियो सेक्शन है भाई. पूरा एक जितने में लोगों का जिम बन जाता है ना, उतना तो केवल कार्डियो सेक्शन है यहाँ पे. Another great thing about this gym, the history is written all over the walls, literally. Look at this. Oh. It has the years. When I came here, I had no money. Joe let me train in his studio anywhere for free. Arnold's that's Schwarzenegger. Arnold. Yeah. Wow. You get to smell the freshly made food, bro. Oh. तो क्रेजी लग रहा है यार ये. See, outside gym पूरा इतना बड़ा है यार ये. Huge. It's huge, bro. A lot of this machinery over here will be like that. Chest. It's line in the front. Third line back there, we got an upside down leg press, hamstrings, hack squats, leg press. If we are going to show you every machine, I think it will take 3 to 4 days, 3 to 4 working days, and we'll be needing, I guess, 5 to 6 hour rest. So Joshua is working out here from last 1 year, and still he's saying he haven't used all machines. Equipment. No, no, like I said, I probably never will. There's so much here. So guys, वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है. बड़ा मज़ा आया यार. पूरा जिम टूर में तो मतलब इतनी सारी मशीन्स है ना कि दिखा भी नहीं सकता सारी मशीन्स. तो जो वो जोशुआ इतने टाइम से ट्रैवल बोल रहा हूँ, वर्कआउट कर रहा है इस जिम में, और फिर भी अभी तक उसने सारी मशीन्स यूज़ नहीं किया. कैसा लगा इस जिम में? बहुत अच्छा, इतना बड़ा जिम. और मज़ा आया वर्कआउट करके. सच अ डिफरेंट फीलिंग. और इस जिम का पर डे का पास $50 का था. $50 यानी 4,250 रुपये. 4,250 रुपये पर डे की फ़ीस है इस जिम की. काफ़ी ज़्यादा यार. I mean it is expensive, but मुझे लगता है काफ़ी worth it है, because it is the most famous gym, और इसमें लोग वर्कआउट करने के लिए like I'm sure कि वर्कआउट करके बहुत डिफरेंट फीलिंग होती है. एक्सपीरियंस ही है ये एक, जहाँ पे आर्नोल्ड ने बॉडी बिल्डिंग अपनी पूरी जर्नी की. तो आई थिंक इट्स वर्थ इट इवन दो इट्स एक्सपेंसिव. सोचो ना यार, कोई जाके बोल दे अपन को कि यार आर्नोल्ड सुबह आएगा 8 बजे. वही तो, वो सुनने में इतना अलग लग रहा था. मैंने एक सेकंड के लिए इमेजिन किया कि सुबह 8 बज रहा है और आर्नोल्ड सामने वर्कआउट कर रहा है. इतना स्टार स्ट्रक वाला फील हो जाएगा. वही ना, दैट्स क्रेजी. अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं अम्ब्रेला ले लेता. जिम से लौट रहा हूँ तो बारिश स्टार्ट हो गई है और मैं पहले छुप जाता हूँ. रिस्क नहीं लेना चाहता. बॉडी सेंसिटिव है काफ़ी. तो 2 ही दिन रह गए शो को. तो यार पूरा ऑल द टाइम है ना, इधर सन एंड्रियस वाली वाइब आती रहती है. देखो ये फायर ब्रिगेड निकल रही है, कभी पुलिस निकल रही होती है, और वो पूरा फील आ रहा होता है कि गेम खेल रहे हो. और गेम की तरह कैसे कार वार चुरा के भाग जाता तुम. यहाँ रिस्पॉन्ड नहीं हो पाऊँगा मैं वापस से. छुपने के लिए मैं इधर स्टोर में आके खड़ा हो गया. अब देखना स्टोर में क्या क्या दिख रहा है मुझे. देखो मत देखो. स्टोर में भी यार ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकते ना. कुछ ले नहीं रहे हैं और कुछ ले भी नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे सारा वो खाने का वो सब है जो मुझे डाइट पे नहीं खाना चाहिए. और काफ़ी सारे लोग ऐसे बोल रहे थे ना कि मैं स्ट्रीट या लॉस एंजल्स पूरा नहीं दिखा रहा हूँ अभी. मैं खुद भी यार केवल यहाँ पर आकर केवल यहाँ से जिम जाता हूँ, जिम से वापस आता हूँ, तभी डिफरेंट जिम चला जाता हूँ. इसके अलावा मैं खुद भी कुछ नहीं कर रहा. बट एक बार कॉम्पिटिशन हो जाए तब आपको
अच्छे से एक्सप्लोर करवाऊँगा। यहाँ पे कुछ डार्क साइड भी वो भी दिखाऊँगा अच्छे से। यार घर चल के मील लेना है, इनसे पूछे अम्ब्रेला के लिए। शायद इनके पास हो। डू वी हैव अम्ब्रेला? Is there any spot nearby where we can get it? Maybe just after light. After the light? Yeah, 1, 2, 3 business. यार लेकिन इतना दूर जाएंगे भी कैसे? थोड़ा सा भी दूर जाने में पूरे भीग जाएंगे। अभी तो इसने बचा के रखा हुआ है गैस स्टेशन है। जैसे इसके बाहर निकलूँगा तो इधर बोला था शॉप वाले भैया ने, तो ये बंद है शॉप से यार। कितने का है? $5. This one is good enough to cover both of us. I think so. 5? Yeah, it's pretty big. Oh, pretty Finally. big. तो लकीली पास में ही शॉप मिल गई जहाँ पर अम्ब्रेला मिल गया, वरना बहुत लंबा दूर तक जाना पड़ता और भीग जाते और तबीयत इजीली ख़राब हो जाती। थैंक गॉड कि ये देखो कासर जैसा घर। ऐसा नहीं ना, वो बचपन में वो आते थे कार्टून्स, उसमें परियां रहती थी, इसमें अपने एयरबीएनबी आ गए। अम्ब्रेला ने काफ़ी हेल्प कर दी। एंड गाइस आज के इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अभी जाके अपनी मील्स बनाऊंगा, देन शाम के वर्कआउट के लिए प्रिपेयर करूंगा अपने आप को। अभी तक मैंने अपना बेस्ट दिया है, 100%, 200%, जितना भी मेरे से पॉसिबल है पूरा दिया है। एंड स्टेज पर ही वही देने वाला हूँ। आप लोग मुझे ऑल दी बेस्ट बोल देना कमेंट सेक्शन में। एंड इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल। पीस।